Hello everyone, welcome to my channel. And in previous lecture, we talked about what is AI, right? So now for this lecture, we'll talk about why is AI important for us, okay, and how it saves human time and effort in decision by making decisions and automation. Okay. So before begin, we'll recall the previous lecture. So what is AI? AI stands for artificial intelligence, and as we all know, it's a technology which is used to making machines or computers think and work like humans, right? Like we learn from experience, right? We will make decisions, right? Based on that, AI will be developed. Okay, now let's begin with the why is AI important for us. So first thing is it saves time. Second, it reduces human effort. Third, it makes decisions faster. And fourth, it helps in automation. Okay, now we'll deep dive into this whys. Okay, so first we will start with the how AI saves time. So for example, think like if we have three records, okay, three student records, and we have to find like which one is the top performer. Okay, so we can easily identify by seeing their marks and all, right? But what about if we have thousand of records, 2000 records, and more than that, right? So in that case, we need something to analyze that amount of data, right? So in that case, AI will help us to identify the top performers in millions or billions of records. That's how AI saves time. Okay, now if we talk about the real life example, then Google Maps, right? Like it automatically identify the fastest route for you. Okay, that's how it saves time. In Gmail, Gmail में एक ऑप्शन होता है स्पैम्स करके, यहाँ पे आपके स्पैम्स वाले मेल्स होते हैं, राइट, जो फेक होते हैं. So by AI, it automatically filter the spam emails, right? So we don't need to check them one by one. So that's how AI saves time. Now, if we talk about YouTube or Netflix, so आप जो भी वीडियो वॉच कर रहे हो, जो भी मूवीज वॉच कर रहे हो, बेस्ड ऑन दैट कंटेंट एआई डिसीजन लेके आपको सिमिलर कंटेंट देता है, राइट? यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे, ओके, और इवन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे भी, राइट? आपने अगर वो शर्ट बाय किया है तो आपको सेम लाइक उस कलर का मे बी अदर कलर्स का आपको सजेस्ट करेगा एआई, राइट, बाय यूजिंग एआई. सो दैट्स हाउ एआई सेव्स टाइम. नाउ सेकंड इज हाउ इट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट. सो ऑब्वियसली लाइक एआई ऑटोमेटिकली आपको मूवीज सजेस्ट कर रहा है, आपको फाइंड करने की नीड नहीं है, राइट? आपको अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजन पर यूज़ करते हो तो आपको चैटबॉट मिलता है जो आपको अगर कोई क्वेरी होता है उसका आपको आंसर देता है, राइट? सो इट ऑटोमेटिकली डन बाय एआई चैटबॉट्स, राइट? आपके कॉमन क्वेश्चंस को आंसर करता है. सो दैट्स हाउ इट रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट हाउ एआई मेक डिसीजंस, सो ऑब्वियसली अगर आपने एआई ने आपको फास्ट रूट दिया है गूगल मैप पे, सो ऑब्वियस सी बात है उसने डिसीजन लेके दिया है, लाइक उसने पहले सारे रूट चेक करे एआई ने, देन बेस्ड ऑन दैट जो फास्टेस्ट रूट है वो उसने आपको दे दिया. ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स की बात करें, आपके बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन योर बिहेवियर, आपको एआई ने सिमिलर कंटेंट दिया, सिमिलर आपको प्रोडक्ट शो करे कि आप ये बाय कर सकते हो, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं जो आपने पहले बाय किए थे, राइट? हाउ इट्स पॉसिबल? बिकॉज एआई ने बाय चेकिंग और बिहेवियर डिसीजन लिया, राइट? So that's how it done. Okay. Now, if we talk about how AI helps in automation, so obviously ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, लाइक एआई आपको प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा है, ईमेल्स जो हैं स्पैम ईमेल्स वो ऑटोमेटिकली स्पैम वाले फोल्डर में जा रही हैं, राइट? ऑटोमेटिकली आप अगर देखोगे लाइट्स वगैरह ऑटोमेटिक लाइट्स आती हैं, राइट? अगर आप वहाँ से निकलोगे तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन होंगी, नए जैसे ही आप दूर जाओगे वैसे ही ऑफ हो जाएंगी. हाउ इट डन्स? एआई ऑटोमेटिकली, राइट? बस उनको
वो सेंस करना है, देन ऑटोमेटिकली इट विल हैपन, राइट? लाइक इन ईमेल्स, ऑटोमेटिकली स्पैम डिटेक्ट किया कि ईमेल स्पैम है, देन उसने ऑटोमेटिकली उसको स्पैम फोल्डर में भेज दिया। सो ये ऑटोमेशन हो रहा है, राइट? सो दैट्स हाउ AI हेल्प्स इन ऑटोमेशन. सो I hope you understood why AI is important for us, right? Because it helps in automation, in decisions, reduces human effort, saves times. That's why AI is important for us. That's why we are using AI, because it do lots of things for us in just seconds, right? So I hope you understood why AI important for us. And if you love this lecture, then like, share, and subscribe. That's all for this video. And in next video, we will talk about real life applications of AI and more about data science and so on, and also about Python, stats, and all those things. Thank you. Thank you for watching.